हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरा नाम है मनोहर पाटिल और आज हम सॉल्व करने वाले हैं द एमसीक्यू दे आर आस्क्ड इनटू द जेईई मेंस एग्जामिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस होता है फॉर आईआईटी के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव एरर। ये जो टॉपिक है क्लास 11 का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट वाला यूनिट एंड डायमेंशन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर दे आस्क द क्वेश्चन ऑन द रिलेटिव एरर और फार्मूला बहुत इजी है। सो लेट्स वी स्टार्ट। So now the question is asked into the JEE Mains 2023. A physical quantity P is given by, हमें फार्मूला दिया है, physical quantity P is given by P equal to A square into B cube divided by C into under root of D. Then the percentage errors in the measurement of A, B, C, D are, so उनका सबका वैल्यू दिया है 1%, 2%, 3%, 4% आर respectively. So and then what we have to calculate? We have to calculate the percentage error in the measurement of quantity P. So quantity P का हमें percentage error calculate करना है और यहाँ पे quantity P जो है कितने physical quantities पे depend है? There are the 4 A, B, C, D और सबका percentage error दिया हुआ है respectively 1%, 2%, 3% and 4%। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन डेटा और अकॉर्डिंग टू दैट रिलेटिव एरर का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट्स वी स्टार्ट। So now here what is given? So here ABCD physical quantity का percentage error दिया है। So that is first physical quantity delta A divided by A into 100. How much given percentage error? 1%. So for B respectively दिया है। So therefore delta B divided by B into 100. Next delta C divided by C into 100. Next delta D divided by D into 100 is equal to, so the measurement of percentage error A, B, C, D is given. How much given? 1, 2, 3, 4% respectively. So 1, 2%, 3% and 4% respectively. So first we write down the given data, then we go for the formula. So formula both easy, you can write down the formula. So for the physical quantity P, we have to calculate percentage error इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी P। सो कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी से बोर्ड पे ध्यान देना आपको अच्छे से। सो P का परसेंटेज एरर कितना आएगा? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P इंटू 100 इज इक्वल टू, सो फर्स्ट A, so that is 2 times delta A divided by A into 100 plus 3 times delta B divided by B into 100, next plus 1 times delta C divided by C into 100, formula both easy, you can remember, and then half delta D divided by D into 100, so we complete the formula. तो फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। सो वेरी सिंपल, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसका आपको रिलेटिव एरर लिखना है डेल्टा ए बाय ए। सो डेल्टा ए आपका एब्सोल्यूट एरर और ए मीन्स आपका टोटल वैल्यू। सो क्या करना है? वेनेवर यू राइट डाउन द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, तो हमें देखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसका जो भी पावर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। आई अगेन रिपीट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है, नाउ दिस इज द ए, हैविंग पावर इज 2, सो राइट डाउन दैट पावर, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। किसके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है? उसको एरर के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। कौन सा एरर? रिलेटिव एरर, उसके मल्टीप्लिकेशन में उसको लिखना है। बहुत आसान है। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी बी क्यूब, सो नाउ 3 इज द पावर ऑफ बी, सो देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 3 into relative error in terms of B. Next, what is the power of C? 1. So therefore here we multiply by 1 into relative error of C. C physical quantity. Next is D. Under root of D means that is the power is 1 by 2. So we multiply by 1 by 2 और उसका relative error। तो फार्मूला सिंपल है, आपको बस easy याद रखना है। Whatever it may be in product or division, याद रखिए अच्छे से। Whatever the physical quantities are in power or division, always take the addition, क्योंकि हम एरर को टोटल सॉल्व कर रहे हैं। always take the addition, so therefore now here we write down the additions। बोर्ड की तरफ अच्छे से ध्यान देना है। so therefore we take the additions।
टेक द एडिशन और नेक्स्ट जो भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर है उसको मल्टीप्लीकेशन में लेना है। राइट डाउन द पावर्स इनटू मल्टीप्लिकेशंस और आफ्टर दैट बहुत सिंपल है, आपको बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। सो डेल्टा ए बाय ए 100%, उसका आंसर आएगा 100 इक्वल टू 1%, फॉर बी 2%, फॉर सी 3% एंड फॉर डी 4%। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 इंटू कितना परसेंट 1, नेक्स्ट 3 इंटू बी कितना चेंज हो रहा है 2%, सो दैट इज 2, नेक्स्ट 1 इंटू सी कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है 3, सो दैट इज 3 प्लस बहुत ही बोर्ड की तरफ ध्यान देना, डी कितना चेंज हो रहा है 4%, सो दैट इज 1/2 इंटू 4%, सो होल ब्रैकेट का परसेंटेज। तो ये तो बहुत सिंपल है, यू कैन कैलकुलेट योर ओन, वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो 2 1s are that is 2 plus 3 2s are 6 plus 1 3s are 3 plus 4 divided by 2, so that is it becomes 2, bracket complete, and now we write down the percentage is equal to, make the addition fast, what is the addition, 6 to 8, 8 and 2 that is 10 and 3 it becomes 13%। तो जो p quantity है उसमें कितना percentage error count होगा, that is 13%। so from here we can calculate the option number B is our correct answer. Now we get the 4 marks. So in such way that we can calculate the questions based on the relative error. बहुत easy, आपको बस 2-3 observation याद रखने हैं। Which observation you have to remember? Calculate the relative error. Any physical quantity का कैसे calculate करना है? अगर वो physical quantities product में हो या division में हो, सबका addition. After that उनका सबका रिलेटिव एरर, आफ्टर दैट उनका जो भी पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, दैट सिंपल। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो देखते हैं फिर अभी वी टेक फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट, वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं अभी कौन इसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, okay, next example again we solve the question of relative error. Now it is asked into the JEE Mains 2022 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर 1%, 2%, 3% respectively. So first of all we have to write down the given data. What is given? The resistance denoted by letter R, so therefore the relative error in terms of resistance multiplied by 100 is given 1%. सेकेंड है करंट, करंट का परसेंटेज एरर कितना है 2%, सो देयरफॉर वी राइट डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2%। और लास्ट वन है आपका टाइम, टाइम का परसेंटेज एरर कितना दिया है 3%। तो आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट डाउन द गिवन डेटा, बहुत ईजी है, दैट इज 3%। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो अभी हमने गिवन डेटा कंप्लीट कर लिया, चलो फिर हम रेट करते हैं फॉर कैलकुलेशन। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर in the direction of dissipated heat will be, तो heat कितना dissipated होगा वो कैलकुलेट करना है। so we have to calculate the heat। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, Joule's law। remember what is the formula of Joule's law? that is heat Q equal to I square RT। so this is the formula, according to that we calculate the how much amount of heat is produce or how much amount of heat is lost when the I amount of current is passing through that wire, for the resistance of wire is R and it takes the time T। so what is the percentage error formula? बहुत simple है, so we have to calculate। so delta Q divided by Q into 100 equal to I square। so what is the power of I? that is 2, so therefore multiply the powers to the multiplication, and then relative error for I is delta I divided by I into 100 plus what is the formula for R? the R raised to power is 1 and T raised to power is 1, so therefore we have 1 into delta R divided by R into 100 plus 1 into delta T divided by T into 100। so now it completed, substitute the value, so after getting the value, so that is 2 into what is the percentage change in current, यहाँ पे दिया है 2%, so it becomes 2 plus how much change in resistance, that is 1%, plus last how much change in time, that is 3%। so whole bracket, and now it is in terms of percentage। so calculate करो जल्दी, fast calculate करना है। what is the 2 2s are 4, next 1 1s are 1 and then 1 3s are 3,
परसेंटेज कैलकुलेट करना है 415 5 plus 3 8 percentage. So complete change in how much heat will be dissipated in the form of percentage, that is 8 percentage. So our option D is the correct explanation. So we solve the JEE Mains 2022 exam questions, we get the 4 marks and the question is based on the relative error. So in such way that we solve the questions on the basis of the relative error. Take the screenshot. We go for the next example. The next example is again we have to solve the question basis on the relative error, and now it is asked into the JEE Mains 2022 का question है, बहुत easy question है. What is given now here? If z equal to a square into b cube divided by c raised to 4, then what is the relative error in z will be. So हमें calculate करना है relative error. तो बहुत आसान है relative error calculate करना. So what is the relative error in the form of z? So now first of all we write down the z equal to a square into b cube divided by c raised to 4. So what is the relative error in terms of z? That is delta z divided by z into 100 is equal to physical quantity first है a, delta a by a. कितना power है delta a का? 2. So therefore we multiply by 2 into 100 plus next b physical quantity. So that is delta b divided by b. What is the power of b? That is 3. So we multiply by 3 into 100 and the last one that is 4 into delta c by c into 100. So in such way that we complete the question. बहुत आसान है, बस इसको अभी solve करना है. So after that what we get? So now look at here board, we have to calculate the relative error. So on both sides, so we all write down this error in terms of percentage. So relative error cancel क्या आएगा? 200 will be cancelled on both sides. So it becomes delta z by z equal to 2 times delta a divided by a plus 3 times delta b divided by b plus 4 times delta c divided by c. So now this is the formula of relative error in terms of z physical quantity. So हमने जो फार्मूला लिखा वो लिखा हमने in terms of percentage error. So relative error में कैसे लिखना है उसको? Just by taking the ratio of absolute error and mean value. So now which option is correct? So that is option number C is correct. We get the 4 mark. We solve one more question basis on the relative error, and the question was asked into the JEE Mains 2022. So take the screenshot. Understood? Very simple. You have to only remember the two observation. The physical quantities are in product or division. Make the addition, and most importantly, so write down the powers. जो फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर रहेगा वही पावर उसके रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेगा. मतलब a का पावर है 2, तो a ने मल्टीप्लाई किया, 2 ने मल्टीप्लाई किया उसके रिलेटिव एरर को. सो इतना सिंपल है. टेक द स्क्रीनशॉट of the given example. So we go for the next. The next question is again similar, and now the question is asked into the JEE Mains 2020 का question है, and the physical quantity is given z equal to a square into b raised to 2 by 3, then root c and d cube, and after that there are the 4 observable quantities a, b, c, d, और respectively उनका सबका percentage is given 2%, 1.5%, 4 and 2.5% respectively. So similarly we have to calculate the percentage error in z. So tell me what is the formula of percentage error in z? So that is delta z divided by z into 100% is equal to first physical quantity है a. So what is the power of a? 2. So 2 into delta a divided by a into 100. So we complete the first plus what is the next? B. What is the power of b? 2 divided by 3. So multiply by that power 2 by 3. What is the relative error for b? Delta b divided by b into 100. Next physical quantity is c. So what is the power of c? That is under root of c. So therefore उसका power क्या आएगा? Half. So that is half into relative error is c, delta c by c into 100 plus next, and the last physical quantity is d cube. What is the power of d? So 3. So write down the powers to the multiplication, and what is the relative error for d? That is delta d divided by d into 100. So make the whole brackets, and now it becomes in terms of percentage. So how to solve? Very easy. So now the all values are given. So percentage a का जो percentage दिया है 2 दिया है, b का दिया है उन्होंने
1.5, सी का परसेंटेज एरर दिया है 4% एंड नेक्स्ट डी का परसेंटेज एरर दिया है 2.5%. तो हमें बस सिंपली उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो व्हाट वी गेट, very easy, 2 multiply by what is the percentage error in A, that is 2%, then plus 2 divided by 3 into 2 divided by 3, what is the percentage error for B, how much given, 1.5, then plus next 1 by 2, 1 divided by 2, what is the percentage error for C, that is 4%, and the last is 3 multiplied by how much for D, that is 2.5 percentage. So taking the whole brackets, so solve, बस आपको इसको अभी multiply करना है. So जल्दी से इसको multiply कीजिए fast. So make the calculation very fast. So what we get, 2 2s are कितना बनेगा 4 plus we know that 1.5 means that is 3 divided by 2. So 3 3 और 2 2 get cancel. Answer is 1. Next is 4 divided by 2, that is 2. And what is the product of 3 and 2.5? कितना आएगा उसका product? That is 7.5. So after calculations, what we get, 7 plus 3, that is 10. 10 plus 4, 14, or 0.5, it becomes 14.5 percentage. So in such way that we get the answer of JEE Mains question 2020. Similar question उन्होंने पूछा है रिलेटिव एरर पे. सो इससे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिलेटिव एरर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एवरी ईयर JEE Mains के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो वी गो फॉर द नेक्स्ट. So next is the question is asked into the JEE Mains 2018. It is also based on the relative error. So we have to read the statement. So density of the material in the shape of the cube, इसका shape दिया है cube, is determined by measuring the 3 sides of the cube and its mass. If the relative errors in the measuring the mass and the length are respectively. So relative error किसका दिया है, mass और length का. So first we write down the relative error. So that is delta m divided by m. कितना दिया relative error उसका, that is 100 equal to 1.5%. और next length का दिया delta l by l into 100 is equal to 1%. So we write down the percentage error in the mass and length. Next what we have to calculate, हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी का परसेंटेज एरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी. सो हमें पता है डेंसिटी मीन्स व्हाट, डेंसिटी मीन्स दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो दैट इज रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v. रो फॉर डेंसिटी, m फॉर मास एंड v फॉर वॉल्यूम. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच शेप इज गिवन, क्यूब. सो जो क्यूब है, सो टेल मी व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ क्यूब. वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर उसके ऑल साइड इक्वल है तो उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या बनेगा उसका, L into L into L, it becomes L cube. So we get the formula m divided by L cubes, and according to that formula we have to write down the maximum error in the percentage of density. तो क्या आएगा फिर यहाँ से, so calculate करना है हमें. So tell me the formula. So that is delta rho divided by rho into 100 is equal to the mass raised to कितना दिया है 1. So therefore 1 into delta m divided by m into 100, and the next physical quantity है that is length. उसका कितना है पावर 3. 3 into delta L divided by L into 100%. So what we get, so that is finally substitute the value of percentage error in mass. कितना दिया है 1.5. So that is 1 into 1.5. Next, that is percentage error in length is 1. So now here 3. So 3 multiplied by 1. So bracket complete, percentage. So what is the product of 1.5 and 1? That is 1.5, and 3 ones are 3. So addition 3 plus 1 4 and 0.5, that is 4.5. So हमने उसको simply calculate किया और we get that. So that is 4.5. Now the question is asked into the JEE Mains 2018. We get the 4 marks. So in such way that we solve the 5 questions they are asked into the JEE Mains examinations. I hope आप सभी को अच्छे से फार्मूला समझ में आया होगा. आपको बस 2 ही ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं. whenever we calculate the relative error, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा उसको आइदर वो प्रोडक्ट में रहे या डिवीजन में रहे, आपको उसको एडिशन में लेना है. वो कैसे सॉल्व करना है, उसका जो भी पावर है वो पावर मल्टीप्लाई बाय उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर लिखना है, एंड देन सब्स्टिट्यूट दैट परसेंटेज एरर. After that we calculate how much change in that physical quantity. So in such way that we complete the 5 questions they are asked into the JEE Mains examination.
आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन टेक्स्ट मी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज़ इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।